Very good morning, friends. So I hope you're all safe as well as healthy. Well, in this particular month, I have been talking in terms of India 7 that talks about the cash flow statement, and we've been talking of different facets as far as a cash flow statement is concerned. Today, in this particular video, I'm going to speak on the accounting treatment, rather not accounting treatment, but the presentation of the interest and the dividend as far as the cash flow statement is concerned, whether we reflect the interest received, the interest paid, the dividend received and a dividend paid, under which activities are these presented. Well, this standard makes a distinction between the fact that whether it is a financial enterprise or a non-financial enterprise, and accordingly, the presentation in the relevant activities are done. Let's identify this in detail, that where are these interest and dividend paid and received reflected in the cash flow statement. CA फाइनल के लिए प्लस बैचेस के अलावा अनअकैडमी पर आपको आइकॉनिक बैचेस भी मिलेंगे। इन आइकॉनिक बैचेस के आपको फीचर्स बताने से पहले आपको ज़रा ये बताया जाए कि इनके प्लान्स की कॉस्ट क्या है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ही आप कह सकते हैं रीजनेबल है और इसके अंदर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं उसके मुकाबले ये एडिशनल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो पहले ज़रा मैं आपको इन प्लान्स के बारे में बता दूं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लान करते हैं सीए फाइनल ग्रुप 1 का, तो अलग अलग प्लान्स अवेलेबल हैं 36 मंथ्स, 24 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स के अंदर आपको सीए फाइनल ग्रुप 1 के सभी 4 सब्जेक्ट्स की जो इफेक्टिव कॉस्ट पर मंथ बैठती है वो आपको आएगी 2375 अ मंथ। और अगर सीए फाइनल ग्रुप 2 को आप अवेल करते हैं तो उसके अंदर भी प्लान्स बिल्कुल सेम कॉस्ट पे हैं, बल्कि अगर आप दोनों ग्रुप्स प्लान करते हैं तो इसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, मान लीजिए अगर आप 36 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो आपकी 8 पेपर्स को लेके जो पर मंथ कॉस्ट आएगी दैट इज अराउंड 1833 अ मंथ। अब ये जानते हैं कि इसके अंदर आपको एडिशनल फीचर्स क्या मिलेंगे। तो एडिशनल फीचर्स की अगर आपसे बात करें तो इसके अंदर 1:1 आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगी। इसके अंदर आपको 1:1 डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज होंगी जिनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेंगी फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, जो भी आप इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ग्रुप 1 तो चारों सब्जेक्ट्स और ग्रुप 1 की बुक्स, अगर आप दोनों लेते हैं तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 सभी की बुक्स, और साथ में इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशंस आपको मिलेंगे। एंड यू विल आल्सो गेट कनेक्टेड टू अ कम्युनिटी थ्रू डिस्कॉर्ड। ये सब कुछ आपको उसी सब्सक्रिप्शन रेट्स में मिलेगा जो अभी आपने देखे। साथ में 1:1 लाइव मेंटरिंग आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। Just at a click of the button, you would be able to discuss all your doubts and clarify your concepts immediately before exams and even otherwise. डेली बेसिस पर आपके साथ लाइव क्वेरीज ली जाएंगी, जिस पर आपके साथ एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और इसके अंदर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। एक कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान आपको दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको आर्टिकलशिप के अंदर गाइडेंस भी दी जाएगी। दिस इज ऑल लाइव मेंटरिंग इन आइकॉनिक प्रोग्राम्स। टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज मिलेंगे। 40% कोर्स कंप्लीशन के बाद आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, उसकी एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको शेयर की जाएगी। उसके बाद फिर अनदर 40% पर आपको फिर से एक टेस्ट कंडक्ट होगा और उस पर एक फिर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाएगी, सो दैट यू कैन कंटिन्यूअसली इंप्रूव बिफोर यू गो फॉर द मेन एग्जाम्स। 100% कोर्स कंप्लीशन के बाद फिर से आपके पास एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, एक फुल लेंथ अंडर एग्जामिनेशन काइंड ऑफ सिचुएशन, सो दैट यू गेट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फॉर योर एग्जाम्स। ये मैंने आपको प्लान्स की ऑलरेडी कॉस्ट दे दी है। इन प्लान्स को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिनमें आप इन प्लान्स में डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वही इंतजार किस बात का है, फटाफट से प्लानिंग कीजिए एंड लेट्स क्रैक इट। दिस इज अ समरी चार्ट व्हिच रिप्रेजेंट्स, एज यू कैन सी, द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड,
dividends paid, and the interest and dividends received. Now, there is something which I think keenly you can look at, and that is the word is interest paid. The word is dividend paid and the interest and dividend received. Because in this particular case, when you're making a cash flow statement, there has got to be an inflow and outflow. You know what interestingly reminds me also that when you consider interest in the books of accounts, as per Ind AS, it is based on the EIR method, which does not represent the actual inflow of that particular year, or it does not represent the actual outflow for a given year. So am I going to consider that in the cash flow statement? Well, of course not. We're going to look at a very simple example immediately after this chart. So the focus number one is that when you're looking at a cash flow statement, you need to consider the interest paid, the dividends paid, the interest and dividends received, which is inflow and outflow. Now, the segregation has to be done in terms of a company which is a financing company and for any other company which is other than a financing company. Now, if you consider the treatment of interest paid as far as a financing company is concerned, its operating activity. For example, if you look at a banking company, the interest which they are making a payment to the customers is related to the operations of the business. But as far as any other company is concerned, it is supposed to be financing activity. Now, if you look at the treatment of interest and dividends received, the interest and dividend paid for a financing company, it becomes again operating in nature. But as far as other company is concerned, it's going to be investing in nature. And when you look at the concept of dividend paid, now whether it's a financing company or a non-financing company, every company would have a capital structure, and that would be a financing activity. Which means that if you're looking at a dividend paid, whether it's a financial or non-financial company, it is supposed to be financing activity in nature. But if you're looking at the interest paid, interest and dividends received, operating for financial. But if you're looking at other companies, interest paid is financing, interest and dividend received is investing in nature. Now, I think also let's have a small little look at an example where we made a mention that as far as the interest income or the interest expense is concerned, it is taken on the basis of EIR as far as the index is concerned. But does that get reflected in the cash flow statement? Let's find this. A firm invests in a 5-year bond of another company with a face value of 10 lakhs and they made a payment of 5 lakh. So the company made an investment investing 5 lakh rupees and they will get a lump sum amount of 10 lakh rupees at the end of 5 years. So we could calculate an EIR at the rate of 15%. So the firm is going to recognize the interest income throughout the period of 5 years based on the EIR, but there is no actual inflow which is taking place on a yearly basis. How would the interest income be treated in the cash flow statement during the period? Nothing. The interest income which is getting recorded in the income statement would not get recorded in the cash flow statement on a yearly basis. And on maturity, when you're going to get that 10 lakh rupees, would we split the amount based on the interest income and the investment activities? Yes. In this particular case, once the amount of maturity is received, that is 10 lakh rupees is received, we will segregate the principal money and the interest income, though of course they are investing activities, but a disclosure in terms of the interest component and the receipt of the principal amount on maturity will be reflected. So this is the treatment of interest and dividends paid and received, financial and non-financial entity is concerned. That's all in this particular video. Thank you for watching and wait for some more knowledge bites coming on this. Thank you, take care and bye-bye.